students, welcome to lecture 1 of your macroeconomics, where we'll be discussing macroeconomics in utter detail. All right. So let us first begin with how macroeconomics started. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें emergence of macroeconomics. All right. Then in this particular chapter, which is introduction, ये introduction chapter होगा आपका. इसमें हम emergence of macroeconomics देखेंगे, right? We'll know about classicals and Keynesian economics. Then we'll read about some basic concepts. Basic concepts जो कि हमें further जो हमारे chapters हैं उसमें help करेंगे, right? So first let us start with emergence of macroeconomics, and this will be starting with a story. Once upon a time, in the world of economics, people were primarily concerned with small-scale individual decisions, जैसे कि how a person buys bread and how a shopkeeper sets price. This world of study was called as microeconomics, as you've already learnt in your class 11th, जहाँ पे हमने माइक्रो को पूरी तरीके से समझा था. Price setting, consumer surplus, producer surplus, right? Perfect competition, types of market, etc. But soon the world changed. Countries became bigger in terms of population, and people started making more goods, and economies grew complex. As the population started increasing, the economies grew large and complex. This this made them focus on the bigger picture, which is macroeconomics, जो कि हमें class 12th में पढ़नी है. What happened next? Something huge happened in 1929. क्या हुआ था? The Great Depression. The world was about to experience one of the most severe economic downturns in history. Now, Great Depression में ऐसा क्या हुआ था? The stock market crash in the United States triggered a global financial meltdown, leading to widespread unemployment, poverty, and economic despair, right? They were losing jobs, people were losing jobs, families had no enough food, right? It was like the whole world had ran out of money. लोगों की जॉब भी चली गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारी फैमिलीज के पास खाना नहीं था, they didn't had enough food to eat. It was a sad time in total. That is why we call it depression, Great Depression. Next thing, now यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की कुछ डिटेल्स हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या था. ठीक है, तो स्टॉक मार्केट्स दे क्रैश्ड इन 1929, जिसको हम ब्लैक ट्यूसडे बोलते हैं. इफ यू हैव वॉच्ड सीरीज, अ कपल ऑफ सीरीज, ये ब्लैक ट्यूसडे पे ही बनी हुई हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. ऑन October 29, 1929, known as Black Tuesday, US stock market it crashed, leading to a massive loss of wealth, right? दूसरी क्या चीज हुई थी? Massive unemployment, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी यूएस में. It skyrocketed from 3% in 1929 to 25% in the year 1933. The other thing that happened was bank failures. Over 9,000 banks failed in the US between 1929 and 1933, wiping out savings and causing panic. Decline in the GDP. The US GDP fell by 30% during the Depression, reflecting a massive contraction in economic output. And global trade, ये कितना कम हो गया था? Over 65% between 1929 to 1933. Due to what? Protectionist policies like tariffs. This detail you don't need to remember. बस आपको इसमें से मोटी मोटी बात याद रखनी है कि क्या हुआ था. स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, बैंक फेलियर्स हुए थे, जीडीपी में
बहुत ज्यादा डिप आया था, डिक्लाइन आया था। दूसरा मेजर चीज हुआ था डिफ्लेशन। Prices for goods fell drastically, leading to deflation. This caused farmers and businesses to lose money, further deepening the crisis. Other thing happened was worldwide impact. Now, domino effect सुना है ना, एक चीज होती है, it leads to the other thing, then it leads to the other thing. ऐसे ही इकोनॉमी में होता है, क्योंकि कोई भी चीज इकोनॉमी में आइसोलेटेड नहीं होती है, राइट? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो अब क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियल आउटपुट इन कंट्रीज लाइक जर्मनी इट फेल बाय 40%। ब्रिटेन ऑल्सो सॉ अ लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जिसमें उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, ठीक है, ग्रोथ कम हुई, राइट? एंड जो भी कंट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कि लिंक्ड थी यूएस से, वो भी दे ऑल्सो गॉट अफेक्टेड। नाउ अंटिल देन, अब तक क्या हो रहा था बिफोर दिस इंसिडेंट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन? क्लासिकल इकोनॉमी, ही इज एडम स्मिथ। क्लासिकल इकोनॉमी बिलीव करती थी इन इनविजिबल हैंड, कि मार्केट जो होती है वो सेल्फ करेक्टिव होती है, वो खुद को खुद से रेगुलेट कर सकती है, आपको किसी इंटरवेंशन की उसमें जरूरत नहीं है। Until then, classical economists believed that markets would always correct themselves. If there was a surplus of good, अगर goods ज्यादा होंगे, prices गिर जाएंगे, and if there was a shortage, अगर shortage होगी goods की, तो prices rise हो जाएंगे। This system was called as the self-correcting mechanism of the market. Economists like Adam Smith, who wrote The Wealth of Nations in the year 1776, had championed the idea that economy would function best with little government intervention. They trusted the invisible hand of the market to balance the supply and demand. ये invisible hands थे, they believed कि वो they'll carry forward all the doings of the economy without anybody else's intervention. बट ग्रेट डिप्रेशन ने ये पूरी आइडियोलॉजी को ब्रेक कर दिया, राइट? इट शैटर्ड दिस बिलीफ ऑफ योर इनविजिबल हैंड्स. द ग्लोबल इकोनॉमी वाज स्टक इन द डाउनवर्ड स्पाइरल. It was stuck in this downward spiral and no invisible hand seemed to be fixing it. So basically क्या हो रहा है यहाँ पे? Classical economics, not economy, was failing, right? Millions of people were jobless, factories stood idle, and no amount of price adjustment seemed to help. So basically, classical economics was failing at this point. Now, this man came, John Maynard Keynes, a smart man named J.M. Keynes, he appeared. John Maynard Keynes एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे who significantly influenced modern economic thought. In 1936 इन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश की which happens to be a Bible during that time, sort of a Bible during that time, the general theory of employment, interest and money. Keynes ने आर्ग्यू किया that during economic downturns गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, राइट? यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आप देखेंगे, क्लासिकल्स बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, बट कीन्स ने आर्ग्यू किया सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए, ग्रेट डिप्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए, जो डाउन टर्न्स, जो स्लो डाउन चल रहा था इकोनॉमी में, जैसे अभी कोविड में स्लो डाउन आया था ना, समथिंग सिमिलर, बट इससे बहुत 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 ज्यादा इम्पैक्टफुल, ठीक है? तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू मैनेज द इकोनॉमी. Next thing, Keynes emphasized on the importance of AD, which you will be learning by the end of this course. AD हम aggregate demand के बारे में पढ़ेंगे when we'll be studying in that chapter, determination of income and employment.
He emphasized on the importance of aggregate demand as the key to a functioning of economy. During depressions, both businesses and consumers they reduce spending. रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, बोथ कंज्यूमर एंड बिजनेसमैन ये अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं विच लीड्स टू ड्रॉप इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सी अगर डिमांड ही नहीं है, यहाँ पे समझते हैं, इफ यू डोंट हैव इनफ डिमांड इन द इकोनॉमी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अब जब प्रोडक्शन नहीं होगा या कम होगा, बहुत कम होगा, तो एम्प्लॉयमेंट पे डेफिनेटली असर आएगा। तो क्या होगा, जॉब कम होंगी। जॉब कम होंगी तो अगेन आपके पास मनी इनकम नहीं होगी। इनकम नहीं होगी तो अगेन आप डिमांड कैसे जनरेट करोगे, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो व्हाट विल यू डिमांड। तो ये एक स्पाइरल में ये प्रॉब्लम चलती रहती है। कीन्स प्रपोज दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग। कीन्स ने बोला गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो सके। नेक्स्ट थिंग, increased government spending would encourage businesses to produce more and hire workers, helping the economy recover. Keynes' ideas were revolutionary indeed, leading to the birth of modern microeconomics. Now, in this way, a new thinking became, in this way of thinking became the start of macroeconomics. This new way of thinking became the start of macroeconomics. Unlike micro, which looks at tiny things, macroeconomics is like a giant telescope. What it is like? It is like a giant telescope that looks at the big things, the bigger picture. Like how much money an entire country makes, right? जैसे कि national income हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हाउ मेनी पीपल हैव जॉब्स, कितने लोगों के पास नौकरी है। वी रीड अबाउट ग्रोथ, इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ, उनकी उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट। हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, हाउ फास्ट prices are going up. It helped people understand how to fix problems that affected millions of people, not just one person or one store, right? So we were moving towards micro, from micro to macro. Keynesian economics dominated government policies after World War II. Keynes का जो उनकी जो विचारधारा थी, it dominated the government policies after World War II. Western nations used government spending to manage economic growth and reduce unemployment. In 1970s, see, इनकी भी जो policies थी, they were not God's statements, उसमें भी problem शुरू होने लगी थी। In the 1970s, stagflation का इशू आने लगा। stagflation क्या होता है? It is the concoction of stagnant growth with rising prices, that is inflation. यहाँ पे कीन्स की policies, they were struggling to address the whole issue of stagflation. Stagflation, as we've already discussed, इसमें क्या होता है? Rising prices, that is inflation, and no jobs. This led to rise of another mindset. See, आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी और दूसरे रेफरेंस बुक्स में भी सिर्फ क्लासिकल से कीन्स तक का ही सफर दिखाया गया है। बट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज इवॉल्व होती है, ये एक जगह जाके रुकती नहीं है। तो आफ्टर 3-4 years अगर आप इकोनॉमिक्स को कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा जो अभी का जो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल्स एंड कीनजियन, राइट। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो दिस लेड टू राइज ऑफ मॉनेटरिज्म championed by Milton Friedman. He is Milton Friedman. He emphasized on money supply. इन्होंने मनी सप्लाई पे एम्फोसिस किया टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन।
फ्रीडमैन का आइडिया जो है 1970s और 1980s में बहुत पॉपुलर था, राइट, स्पेशली ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ दीज टू जेंटलमैन. Now, macroeconomics evolved, blending ideas from Keynes and Friedman, leading to school of thought like New Classical Economics and New Keynesian Economics. See, ये school of thoughts क्या होते हैं? It is not some school, DPS, any such school. ये वो school नहीं है. School means एक similar thought के लोग उस school के हैं. ये 4-5 different schools हैं. इसके अलग-अलग प्रोपाउंडर्स हैं और वो उनकी विचारधारा सिमिलर है, इसीलिए वो एक स्कूल में है. ये मान लीजिए सोचते हैं एप्पल इज रेड इन कलर, ये सोचते हैं एप्पल इज ग्रीन इन कलर, ये सोचते हैं एप्पल इज लाइट रेड इन कलर, ये सोचते हैं एप्पल इज डार्क रेड इन कलर. सी ये सब किसकी बात कर रहे हैं? एप्पल की बात कर रहे हैं. बट ये एप्पल को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, इसकी वजह से ये डिफरेंट स्कूल्स के हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ schools of thoughts. Today, macroeconomics guide governments and central banks in managing issues like economic growth, inflation, employment, influencing policies, and the impact of millions globally. And this happens to be the subject matter of your subject. All right, thank you here, and we'll meet in the next lecture.